कोई और धर्म में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर में करोड़ों लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम में शामिल हो रहे हैं। मुसलमानों को इस पर गर्व होना चाहिए, उनको अपने धर्म पर अभिमान होना चाहिए। हम आज की वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर लोग इस्लाम में क्यों शामिल हो रहे हैं, दूसरे धर्मों की तुलना में लोग इस्लाम को क्यों चुन रहे हैं। लोगों की कहानियां द्वारा हम उनके धर्म परिवर्तन का कारण जानेंगे और भारत के मुसलमान इससे क्या सीख सकते हैं, यह जानने की कोशिश करेंगे। सत्यमेव जयते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अमेरिका का प्यू रिसर्च सेंटर यह दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। इसकी रिसर्च के हिसाब से अगले कुछ साल में दुनिया में 1,26,00,000 लोग अपना धर्म परिवर्तन कर अपनी खुद की पसंद से इस्लाम में शामिल होंगे। अमेरिका में आज जितने मुसलमान हैं, उनमें से आधे ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है और इस्लाम में शामिल हुए हैं। अमेरिका के रिसर्च के हिसाब से पिछले कुछ सालों में 3.5 लाख यूरोपियन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। अब यह प्रश्न जरूर बनता है कि इतने अमीर प्रगतिशील देशों से लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं, जबकि इस्लाम के बारे में दुनिया भर में नकारात्मक चीजें दिखाई जाती हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इसकी जांच पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि लोग अपना धर्म परिवर्तन इस्लाम की तरफ क्यों करते हैं। इसमें सबसे बड़े कारण यह है कि लोग अपने जिंदगियों में अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस्लाम के नैतिक मूल्य, पूर्व धर्म के साथ असंतुष्टि, कुरान में लिखे गए मूल्य, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से प्रभावित होकर, अपने आसपास के मुसलमानों के व्यवहार से प्रभावित होकर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम हो जाते हैं। अब हम दो लोगों की धर्म परिवर्तन की कहानी सुनेंगे और व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग अपना धर्म परिवर्तन इस्लाम की तरफ क्यों कर रहे हैं। I was angry. I was just full of hate, and it just fed off itself. I had devised a plan, create my own IED, homemade bomb, and I was going to set it off right outside the Muncie Islamic Center. 200 plus killed or injured. That was the plan. I saw an opportunity to do one last thing for my country. This was my rationale. I knew I would end up in federal prison with a needle in my arm. I didn't care my hatred of Islam. It was the only thing that was keeping me alive. So one day my daughter comes home, 2nd grade maybe. She was telling me about this little boy who sat across from her. His mom came to get him. She said she had scarves on her and she had a dress all the way down to her feet and couldn't see her on nothing but her eyeballs. At that point I snapped. Started spewing things out of my mouth that should never be said in front of children or anything. She didn't say anything. It was the look on her face. I remember my daughter looking at me like I was absolutely the craziest person on the face of the earth. No, I saw it in her eyes. I made her question that love. And that's when the light bulb came on. I decided to give the people of this community one more chance. So I went to the Islamic Center, see a gentleman in the shoe room taking off his shoes. He looks at me and he smiles. He said, "Can I help you?" And I said, "Yeah, I want you to teach me about Islam." So he went and he gave me a Quran. Read this. Come back when you have questions. So I did. And I would see things in the book. I'd be like, there it is. I got them right there. Explain that to me. And they would. This was a kind of awakening. Long story short, 8 weeks after that first day I stepped into the Islamic Center, I became a Muslim. I'm a Muslim, a veteran, and a proud American. I had learned that I was completely wrong about everything that I felt. You know, Judaism had a message, Christianity had a message, Islam had a message. Funny thing is, though, it's the same message. It's about peace. The big thing is now to stop the hate. Nothing good has ever come out of hatred. I've done too many things. I've hurt a lot of people. I have to live with that. But if I can stop somebody else on the path of non-forgiveness, I want. अभी आपने रिचर्ड मैकेनी की कहानी सुनी, किस तरह वो मुसलमानों से बेहद नफरत करते थे और अपने देश के लिए मुसलमानों की मस्जिद उड़ाना चाहते थे, 200 लोग को मारना चाहते थे, जबकि वो जानते थे कि इसके कारण उन्हें भी मौत की सजा हो सकती है। पर एक दिन अपनी बेटी के सामने जब उन्होंने इस्लाम के बारे में नफरत उगली और उनकी बेटी की प्रतिक्रिया वजह से वो शर्मिंदा हो गए और वो मुसलमानों से मिलने वही मस्जिद चले गए जो वो उड़ाना चाहते थे। कैसे वहाँ के मुसलमानों ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और उन्हें पढ़ने के लिए कुरान दी और सब्र से उनके प्रश्नों का जवाब दिया और सिर्फ 8 हफ्ते बाद उनमें ऐसा बदलाव आया कि वह खुद मुसलमान हो गए और अब वह लोगों को इस नफरत की राह पर चलने से रोकना चाहते हैं। इस खूबसूरत कहानी के बाद हम एरन बॉयड की कहानी सुनेंगे कि किन कारणों से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को अपनाया। As a Mormon, which is a specific type of Christianity, and
going to the Mormon church as a child, I have very specific memories of learning things about the Mormon religion that didn't make sense to me. Some things that were even like oppressive in a way towards other people. And so as a child, it didn't make any sense to me, and I questioned it. And then as I grew older, through some family difficulty, my parents no longer being together, we no longer continued practicing the Mormon faith, and I continued to search for God. I always, as a child, had love for God. I loved to pray. I believed in God, but I didn't believe in what I was being taught. And as I got separated from the Mormon faith and continued to struggle through difficulties, I got angry. I didn't understand what was happening, and I became atheist. But Allah subhanahu wa ta'ala always kept a curiosity and an appreciation in my heart for discovering the truth, for finding peace and finding contentment. And in 2017, I had met a group of friends who began to truly introduce me to Islam in a time where I was ready to really learn more. And I decided to fast Ramadan with them as a non-Muslim, just in solidarity and in curiosity. And throughout the month of Ramadan, I read the Quran, the English interpretation, but also listening to it. And throughout that month, that's when Allah really opened my heart and really invited me to understand who my Creator is and who I am as a creation of God, and just gave me the opportunity to learn how to worship Him correctly. And it brought me so much peace and so much joy to learn how to live my life in the best way for my Creator and in the most beautiful way I can here on my time on earth. So it was such a blessing, and 3 days after Ramadan, I took my shahada. It was no questions after that. I knew I was. अभी आपने एरन बॉयड की कहानी सुनी, कैसे वो बचपन से खुदा को तलाश कर रही थी, कैसे कुछ साल बाद अपने दोस्तों के व्यवहार की वजह से उन्होंने रमजान में रोजे रखे और कुरान का अभ्यास किया। जिंदगी भर से उनके दिल में जो भी प्रश्न थे, उनके जवाब उन्होंने कुरान में पाए, और रमजान खत्म होने के 3 दिन बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम को अपना लिया। अब हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि उन्होंने अमेरिका में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम होने के कारण कितनी कठिनाइयां झेली और उनके बारे में उन्होंने क्या किया। It's absolutely challenging living as a Muslim in the USA. The religion is not respected. It's not understood. It's really just not understood. People who are Muslims struggle with their Muslim identity, struggle with their practice. The reminders are not so readily available, like the adhan. The adhan going off across the whole community and everyone knowing that it's time to pray. Like when you're in the United States, that reminder comes on your phone. When I decided to start wearing hijab in the United States, that was where I really started facing challenges in my transition, becoming a Muslim. Because my Islam was on show for everyone around me, and so I had to really be prepared to be a representative of Islam. I had to be prepared to be righteous, be pious, be caring, and be able to navigate people's discomfort with my religion. एरन बॉयड बता रही हैं कि एक अल्पसंख्यक होने के कारण अमेरिका में मुसलमान होना काफी मुश्किल था। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जाती है, उसके बारे में लोगों के दिमाग काफी वहम थे, और इसका जवाब उन्होंने अपने व्यवहार से दिया। उन्होंने अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधि समझा और इस्लामी मूल्यों के हिसाब से अपना व्यवहार बदला। इन दो कहानियों में भारतीय मुसलमानों के लिए काफी सीख है। इन दोनों कहानियों में आपने देखा कि मुसलमानों के व्यवहार से यह दोनों लोग इस्लाम की तरफ आकर्षित हुए, और यही बात भारतीय मुसलमानों के लिए जानना जरूरी है। किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में बहिष्कार किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, पर उनके अखलाक मक्का के लोगों की तरफ कभी नहीं बदले। उन्होंने नरमी और सब्र का सहायता लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपनी कुरान में उनके अखलाक को अजीम दर्जे का बताते हैं। जब उनको मारा गया, उनके लोगों का बहिष्कार किया गया, उनको जादूगर और झूठा कहा गया, और कैसे उनकी खुद की पत्नी खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की बहिष्कार के कारण मौत हुई। उन्होंने अपने अखलाक कभी नहीं छोड़े, और इन्हीं अखलाक के कारण मक्का के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। भारतीय मुसलमानों को अपने धर्म के बारे में अभिमान होना चाहिए, अपनी कुरान के बारे में अभिमान होना चाहिए, अपने रसूल के बारे में अभिमान होना चाहिए। उनको अपने रसूल की जिंदगी का अभ्यास करके, उनकी जिंदगी से सीख कर अपनी जिंदगियों में लागू करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर अभिमान करना चाहिए कि उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचपन से और पैदाइशी एक ऐसा खूबसूरत धर्म दिया जिसे करोड़ों लोग अपने पुराने धर्म छोड़कर अपना रहे हैं, और इसमें मुसलमानों के अखलाक काफी जरूरी है। अगर भारतीय मुसलमान अपने ऊपर आने वाली आफतें से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखाया हुआ रास्ता अपनाना होगा, उनके अखलाक अपनाने होंगे, उनका सब्र अपनाना होगा।
उनकी नम्रता अपनानी होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शुक्रगुजारी करनी होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इतना अजीम धर्म दिया। हम यह वीडियो एरिन बॉयड के अजान के ऊपर की प्रतिक्रिया से खत्म करेंगे। यह वो लोग हैं जो बचपन से मुसलमान नहीं थे, जिन्हें इस्लाम विरासत में नहीं मिला था, जिन्होंने इस्लाम अपनाया, और ये लोग इस्लाम का मूल्य जानते हैं, इसीलिए इस्लाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शुक्रगुजार हैं। I just feel so much beauty, so much peace, so much happiness. Allah knows best. And then, alhamdulillah, peace. I just feel so grateful to be a Muslim and to know the beauty of Islam and to understand the beauty of my Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. It's an honor every time I get to listen to that. And it's an honor. अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाइयों के साथ यह संदेश पहुंचाएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो लाइक करें। जय हिंद, सत्यमेव जयते।